हमारे प्यारे बाबा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके अद्भुत सत्संग, सेवा और इस पूरे प्रोग्राम के लिए हम सब आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। विशेष आभार उन सभी प्यारे सेवादारों के लिए जो हम सबके लिए स्वादिष्ट भोजन करते हैं और दिन रात सबकी सेवा करते हैं। इस बार कुछ नए सत्संगी प्रेमियों को अपने दया करके यहाँ आने का मौका दिया, जिनको काफी समय से सतगुरु का सेवा एवं दर्शन नहीं मिले थे। उन सभी की ओर से हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अच्छा, हम अभी आपको एक भजन बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ट्रांसलेशन। Our beloved dear Babaji, we are very much thankful to you for all the wonderful satsang, seva, and the program. We are thankful for it. Special thanks to all those dear sevadars who prepared delicious food for us. Okay. And who did seva day and night for everyone. Due to your grace, this time some new satsangis got the opportunity to come here who did not get the company or darshan of a Sadguru since a long time. We thank you millions of times. We thank you millions of times on behalf of these dear ones. Radha Swami, we would like to sing a bhajan for you, which will be in page 85. Or, a nuestro querido y amado Babaji. Estamos muy agradecidos contigo, muy agradecidos por todos los maravillosos satsangs, el seva y el programa. Agradecimientos especiales a todos los sevadares que nos prepararon comidas deliciosas e hicieron seva día y noche para todos. Por tu gracia, algunos nuevos satsangis que no habían tenido la compañía ni el darshan de un Sadguru desde hacía mucho tiempo pudieron venir al programa. Damos millones de gracias en nombre de estos amados. Radha Swami. Nos gustaría ahora cantarte un bhajan. Aja, aja, aja mere kirpaji, tukiyate sahare, ekon jo bigari meri, takadir samare. Aja, आजा मेरे कृपालजी दुखिया है सहाय है कौन जो बिगाड़ी मेरी तकदीर समाए आवे
aveti tere sevada halaki hoya halaki hoya aj kelu कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे कृपाल जी दुनिया तेरे सहारे कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आज तेरे बाजो दाता जी अंधेर हो गया अंधेर हो गया आज तेरे बाजो दाता जी अंधेर हो गया अंधेर हो गया देवो दर्शन आके जी चमन दे आए कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे कृपाल जी दुखिया तेरे सहारे कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे अपनी मेरी चाहिए बचाओ आए के बचाओ आए के अपनी मेरी चाहिए बचाओ आए के बचाओ आए के ना तेरी बातों और सहारा सतगुरु जी प्यारे कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे कृपाल जी दुखिया तेरे सहारे कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे इस दुनिया सारी पानी है बम्पर है मचा रहे बम्पर है मचा रहे इस दुनिया सारी पानी है बम्पर है मचा रहे बम्पर है मचा रहे दया करो दाता जी लाभो अधिक पुकारे कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे कृपाल जी दुखिया तेरे सहारे कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे संगत दातु है राता जी एक आचा जाए बखारे एक आचा
संगत धातु है राधा जी इकार चार बखारे इकार चार बखारे मेरा के आसारा तेरे चार और सहारे है कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे आजा 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 मेरे कृपाल क्योंकि आते सहारे है कौन जो बिगड़ी मेरी तकदीर सवारे। Thank you. राधा स्वामी स्वामी जी महाराज की बात याद रखा हंसनी क्यों पीवे तू पानी हंसनी क्यों पीवे तू पानी। परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swami Ji Maharaj. स्वामी जी महाराज आत्मा की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह से आत्मा सतलोक सचखंड परमात्मा का धाम छोड़ के इस काल और माया के जाल में आई और मन के दायरे में कर्म करके मलिन हो गए। So in this Bani, Swamiji Maharaj is referring to the soul and saying that this soul which has come from God Almighty, it has left that world of God Almighty and Sachkhand and has come into this realm of Kal, and with the mind it is doing all kinds of deeds. कहते हैं आके जब ब्रह्म तक निर्मल थे, ब्रह्म के आगे नहीं पार ब्रह्म तक निर्मल थे, अब ब्रह्म में आके एक खोल कारण शरीर का पर्दा यानी खोल चढ़ गया। So she was pure till Parbrahm, and when she came into Brahm, the causal covering, she was covered by the causal covering. कारण शरीर में आ उतरी, वहां से ही काल का देश स्टार्ट होता है। तो काल ने अपने सब देश में शरीर को प्रधान रखा है, वहां कारण शरीर में आई, फिर वहां से नीचे उतर के सहस्दल कमल में सूक्ष्म शरीर में आई। So once she entered into Brahm, she came in the realm of Kal, and Kal has kept the bodies as the essence, the coverings as the essence, and she was covered by the causal body. After that, when she came down to the Sahasdal, the 1,000-petal lotus, or the astral plane, she was covered by the second, the astral body. फिर वहां से नीचे उतरी और आके इस स्थूल शरीर में दोनों आंखों के बीच में आत्मा ने अपना ठिकाना जमाया। And after that, she came further down, and
she settled down at the eye center and got the physical covering. आत्मा ने दोनों आंखों के यहाँ बैठ के उसका चेतन प्रकाश नीचे उतरा, जिससे पंच प्राण और पंच प्राण से शरीर का कारोबार चलता है। So, sitting at the eye center, the attention of the soul was then put within the body, and there, through the five pranas, the rest of the body came into being. तो कहते इस तरह से आत्मा मंडल बाई मंडल नीचे उतर के इस स्थूल शरीर में आके मन के दायरे में कर्म करके जीवात्मा बन गई। So that way, she came down from God Almighty, and after being covered by these different bodies, finally in the physical, with the mind, she became the Jivatma. कहते हैं अपने आप को भूल गई, अपने घर को भूल गई, कहते अपने पिता परमात्मा को भूल गई। So here she forgot her true home, she forgot God Almighty, she forgot her true father. तो इसीलिए परमात्मा ने जो है मानव शरीर की रचना किया और इस मानव शरीर के अंदर में अपनी सारी बात साथ रखी, यानी जो कुछ ऊपर मंडल हैं सब इसके अंदर बनवाया और आप भी इसी के अंदर बैठा और अपने से मिलने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा। So she forgot about God Almighty and about her true home. And then God Almighty created the human form. And in this human form, He set all His creation within the human form. And the path to go back to God Almighty was also created within that. And He Himself came and sat within that form. तो कहते हैं कि इस तरह से वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, हंसनी आत्मा को हंस करके संबोधित करते हैं कि तू हंस है, पवित्र आत्मा है, तू क्यों पीवे तू पानी, तू इस काल और माया के जाल में आके पानी क्यों पी रही है, तेरे अंदर तो परमात्मा ने दूध का सागर ही भरा है, तू अंदर जाके वो क्षीर दूध को पी। So Swamiji Maharaj refers to the soul as the swan, and he addresses the swan, he addresses the soul, and says that having come into this world, why are you drinking water when God Almighty has kept an entire ocean of milk within you? So you should go within and drink that milk instead of drinking water outside. क्योंकि हंस के चोंच में ऐसे गुण होते हैं, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसे तू भी, तेरे अंदर भी ऐसी ताकत है। The swan has this ability that if you mix water with milk, it drinks the milk and it leaves the water. So Swamiji Maharaj refers to the soul that you also have this ability of leaving all this outside and drinking milk, pure milk. तो कहते हैं जो दुनियावी चिंतन है, दुनियावी सामान है, ये सब काल के धोखे हैं, पानी के समान हैं, इसमें कोई सार नहीं है। तेरे अंदर दूध का सागर परमात्मा ने रखा है तेरे लिए, तो जाके वो पी। So Swamiji Maharaj says that this delusion of this world and the deception of Kal, these are like water. And he says that don't drink this water, don't get swayed by this delusion and this deception here. Instead, drink that true milk which God Almighty has kept within you. हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर सीर बड़ा घट भीतर, पियो सूरत तानी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ने तुम्हारे अंदर दूध का सागर ही रखा है। जो सदगुरु ने तुम्हें रास्ता बताया है,
शुद्ध शब्द अभ्यास करके अंदर आ जाओ और उस दूध को पियो। So Swamiji Maharaj says that God Almighty has kept an entire ocean of milk within you, and your master has shown you the path, and he has given you the Surat Shabd Yog. So you do the practice of that Surat Shabd Yog and go within and drink that milk. क्योंकि परमात्मा ने इस मानव शरीर की एक स्पेशल रूप से रचना किया है जो 84 लाख शरीरों में नहीं है। कहते इसके अंदर परमात्मा ने 16 लोक और अपना सारा बात साथ रख के आप खुद बैठा है। तो ये एक स्पेशल नर नारायणी शरीर है और परमात्मा ने दिया है इस आत्मा को इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। This human form is a very special form created by God Almighty, and it is the what He has kept in this is not there in any other form of creation. So within this human form, He has kept His entire creation. He has kept His entire 16 planes within this human form, and He Himself is also residing within this human form. कितने जन्म हमने मानव शरीर पाए, लेकिन मन माया ने धोखा दे दिया और हम अपने असलियत को भूल गए, सदगुरु नहीं मिले और हम अपने घर से अपने पिता परमात्मा से दूर रह गए। We have had this human life so many times before. We have been born as humans many times, but in all our previous births, we have been deluded by Maya and the mind, and we have lost that opportunity, and we have forgotten about our true home. तो कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पुण्य से मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है, नहीं तो ये बड़े दुर्लभ चीज हैं। कहते संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। कहते दुनिया में कोई दुर्लभ चीज है तो संतों का मिलना, समागम और सत्संग। हरि कथा का मतलब सत्संग। So, after the good deeds of millions of previous lives, God Almighty graces us with the life of a human being. And in this human being, we have to realize God Almighty, because masters say that the most rare thing to get is the company of the masters and to listen to what the masters have to say, because everything else, whether it is a spouse or children or families, that in all the beings they have this. So only as a human you have this rare opportunity of coming in the company of the masters. कहते हैं अच्छे बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, धन दौलत, ये सब मिलना कोई भाग्यशाली नहीं है, ये तो पापियों के भी होते हैं। कहते हैं वही भाग्यशाली है जिसको ऐसे मानव शरीर का समय पाके सदगुरु मिल गए। कहते जिनको सदगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं बढ़ा। So having spouse or families, children or wealth or status, all this, one cannot say that it is a great fortune, because that also is with sinners. And when one can say that he has good fortune is when he has the company of the masters, company of the saints, because the masters say that once you have the company of the saint, then your account here in the realm of Kal is settled. कहते एक बार भी अगर गुरु सदगुरु पहले मिले होते, हम उनका हुक्म माने होते, तो आज हम इस दुनिया में नहीं रहते। तो पहले हमें कोई सदगुरु ना मिला मिला तो हम उनके हुक्म पे चले नहीं, उपदेश नहीं लिया। तो कहते अब ऐसा समय मिला है परमात्मा की कृपा से कि सदगुरु भी मिले, नाम भी मिला। तो हमें चाहिए कि उनके हुक्म का पालन करें, सुमरन भजन करके अपने घर जाने के बारे में सोचें। The fact that we are here is because in several
earlier human lives, we have never had the company of the masters. And even if we have had that fleeting company of the masters, we have not sought initiation or done the practices in those previous lives. That is the very reason why we are still here. And in this life, now you are indeed fortunate that you have had the company of the masters also, and you have been initiated also. So now it is incumbent upon you to use this very rare opportunity and make the most of it and do your devotion. कहते हैं इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो राजा होवे या भिखारी, सब दुखी है। कहते धन दौलत को पाके हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें सच्चा सुख शांति मिलेगा। कहते हैं ना सुख धन दौलत में है, ना सुख मानव बढ़ाई में है, ना सुख कहते हैं कि राज्य में है। सुख शांति आपके अंदर उस नाम में है। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। कहते जिन्होंने नाम को अपना जीवन आधार बना लिया वो सुखी है। जिन्होंने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया, वो चाहे राजा हो भिखारी, सब दुखी। In this world, there one cannot get happiness or joy or peace, but whether it is a beggar or whether he is a king, there is no permanent peace or joy uh, with them. There is no joy or happiness or peace in getting or amassing wealth, or no peace or joy in getting status in the society. If there is true peace and there is true happiness, then that is when we are connected with the holy sound current within. So only when we are connected with the sound current, we can say that we have true happiness and true peace. कहते हैं एक बार जो राजस्थान में महात्मा हुए, रज्जब दादू दयाल के शिष्य, तो दादू दयाल के बाद रज्जब भी गुरु बने। तो उनके बारे में कहानी आती है कि वो एक मुस्लिम परिवार में, धनी परिवार में पैदा हुए थे। और पहले जमानों में क्या था कि घोड़े गाड़ी के ऊपर और रिक्शा के ऊपर बारात जाते थे, नहीं तो ज्यादातर लोग चल के ढोल नगाड़ा बिगाड़ा लेके, ढोल बिल बाजा वजा लेके चलते थे 10-10 किलोमीटर तक। तो पहले सवारियां नहीं थी, रोड नहीं थे और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोग चल के जाया करते थे। तो रज्जब की बारात निकली थी और थोड़ा धनी परिवार में पैदा होने के कारण से उनको दुल्हा बना के घोड़ा पे बिठा के लेके जा रहे थे और लोग पीछे पीछे चल रहे थे ढोल नगाड़ा के साथ में। So Rajab, he was the successor to Dadu Dayal in Rajasthan, and Rajab was born in a rich Mohammedan family. Now, in those days, marriages, when they happened, the processions would go either on horseback, or there were there would be a large procession which would follow, and mostly they would walk on foot, and they would walk about 5-10 kilometers like that in a procession, with all the music playing, and the bridegroom would sit on a horse and go towards the towards where the ceremony is to be held, or where the bride is staying. तो लेके निकले, 8-10 किलोमीटर पे दादू दयाल का आश्रम आ गया। सवेरे 6:30 बज रहे थे। दादू दयाल अपने आश्रम से सामने नीम का एक पेड़ था, नीम का चौतरा था, उस पर बैठ के दातुन कर रहे थे, नीम का लकड़ी लेके दांत साफ कर रहे थे। So when they so Rajab's wedding was fixed, and the procession started in the morning, and he sat on the horse, and there was a large procession behind him,
He was from a rich family, so it was a very large procession, which with all the music playing and all of that going towards the place where the ceremony was to be, marriage ceremony was to be held. So on the way, about 10 kilometers down the line, uh, there was this ashram of Dadu Dayalji. And in the morning, Dadu Dayalji was sitting below the neem tree opposite to his ashram. And with the twig of the neem tree, he was brushing his teeth when the procession of Rajab came. तो जब रजब की बारात दादू दयाल के आश्रम के सामने से ही रास्ता था निकला, तो उन्होंने देखा महात्मा सामने बाहर बैठे हैं और दांत घस रहे थे। तो रजब ने सोचा कि चलो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो इनका आशीर्वाद लेके जाए, और वहां से घोड़े से उतर के और जाके उनको नमस्कार किया। So when Rajab came across Dadu Dayal's ashram, he saw that Dadu Dayalji was sitting outside and he was brushing his teeth. So he felt that I'm going indeed for getting married, and it is a very auspicious thing to see the master. And so he got off from his horse to take and seek the blessings of Dadu Dayalji for his marriage. जैसे उन्होंने नमस्कार किया तो वो संस्कारी आत्मा थे। अब दादू दयाल चुप नहीं रहे, उन्होंने एक वाक्य कह दिया, रज्जब तू गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हर भजन को करे काल को ठोर। ये बात कहते उसको बाण लगे जैसा लग गया। So when Rajab bent down to seek the blessings of for his marriage, to bow down to Dadu Dayalji, Dadu Dayal observed that indeed this is a soul of past impressions. So he did not withhold a statement that came out from him, and he said that रज्जब तू गजब किया। Rajab, you have done a miracle that you have come into this world भजन के लिए to get freedom, to go back to God Almighty, but instead you have tied this ceremonial thread on your head and you have given invitation to Kal. तो इतना कहते ही उसके दिल में बाण लगे जैसा लग गया, और वो जाके बगल में बैठ गया, कहता मुझे शादी नहीं करनी। So this immediately affected Rajab, and Rajab then decided that he is not going to get married. So he went and he sat down there. तो लोग आके मनाने लगे, अरे क्या हो गया, दर्शन के लिए आया तो इसका दिमाग के चेंज हो गया, इसने कुछ मंत्र तंत्र कर दिया। So all his family members started convincing him, and all of them started feeling that Dadu Dayal had done some. He had done something and cast a spell on Rajab. So he therefore decided not to get married. तो बाद में बहुत समझाए, बोलते नहीं मैं नहीं करना। तो उन्होंने, लोग नहीं मान रहे थे तो कपड़ा उतार के एक पत्थर पे रख दिया, शादी का पूरा ड्रेस, और नेकर बनिया इनके ऊपर बैठ गए, कहते मुझे नहीं जाना। So they continued to convince him that he should go and get married, and that was the reason he had come. But since all were insisting so much, finally Rajab decided that decided he is not going. So he removed all his attire for the marriage, and he just sat there in his inner garments. तो बाद में दादू दयाल कहते, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो आशीर्वाद दिया, आप लेके जाओ। ये बोलता मैं नहीं करना नहीं। तो बाद में सब परेशान होके उसके छोटे भाई को कपड़ा पहना के उसको घोड़ी बिठा के लेके गए। So then they told Dadu Dayal also that whether he had cast a spell and why there was such a change in behavior. But then Dadu Dayal said that I have not done anything. In fact, I blessed him. But Rajab refused to budge from there. So finally, the family members decided that his younger brother will
get married to that bride. So they made him wear that marriage attire, and they put him on the horse and took him. तो कहते इस तरह से वो जब बैठ गए तो बैठ ही गए। फिर बाद में दादू दयाल की सेवा और भजन, सेवा भजन, और एक अच्छे महात्मा हो गए। तो दादू दयाल जाने के समय वही रज्जब को अपना गादी पे बिठा के गए। So thereafter, Rajab stayed with Dadu Dayal ji in his ashram only, and he used to do his seva and do the devotion. That was the only thing he did, and he stayed there permanently. And later, Dadu Dayal made Rajab the successor to him. तो कहते हैं इस तरह से कहते हैं कि जो संस्कारी आत्माएं होती हैं जब संतों के पास आती हैं वो पहले से ही तैयार होती हैं। गुरु का वाक्य रूपी तीली लगते ही बारूद फट जाता है और उनके अंदर दुनिया का प्रेम प्यार मोह सब खत्म हो जाता है और वो सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। So like that, the Guru Mukhs, they all come with past impressions, and when they come in the company of the masters, then whatever the masters say, it affects them like just lighting light to the dynamite, and they just blast away, and they kick the world away and take completely towards devotion. तो वही स्वामी जी महाराज कहते हंसनी क्यों पीवे तो पानी, सागर चीर भरा घट बीटर, पीले सूरत तानी। तो अपने सूरत को ऊपर चढ़ा के अंदर जाके वो दूध का सागर तेरे अंदर परमात्मा ने भरा है, तू वो पी ले। So Swamiji Maharaj addresses the soul and says that he addresses the soul as the swan and says that why are you drinking water outside? Instead, you stretch your soul and go within and drink that reservoir or that sea of milk which is within you. सागर सीर बरागट भीतर पियो सूरत तानी जग को जार दसो नभ अंदर मदर पर निशानी। तो वही कहते हैं कि जग को जार धसो नभ अंतर। कहते हैं कि ये दुनिया को जला के अपने अंदर से निकाल दो और सुर शब्द का अभ्यास करो, अपनी रूह को आकाश के ऊपर लेके जाओ, जहां जाने के बाद में गुरु का दर्शन होता है। जो गुरु ने आपको नामदान दिया रूहानी रूप में वहां अंदर बैठा है, वो आपके अंदर प्रकट हो जाता है। So he says that he addresses the soul and tells it that you burn the world that you're carrying within you and all the attachments to this world, and do the practice of Surat Shabd Yog and go within and go inside in the sky within, and there you manifest the radiant form of the Master. दुनिया का सामान 4 दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये सब जहर ही है। ये सब हमें अपने घर जाने के रोकने के लिए काल ने तैयार किया है। कहते हैं हम उसी को चख रहे हैं, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। So he says that these bittersweet tastes of the world, they all look interesting and they look attractive, but they are all poison, and this is the poison which deludes you and doesn't allow you to go within to your true home. तो कहते हैं गुरु का हुक्म मानो। अभी आपका मन बहुत मलिन हो चुका है, उसको निर्मल करने के लिए कठिन साधन की जरूरत है। तो 2.5, 3, 4 घंटे की बैठक बनाओ, 9 से 10वें में आ जाओ और अपने सुरत को ऊपर चढ़ा के जो परमात्मा ने आपके अंदर में रखा हुआ है उस चीज को हासिल करो। आप धन्य हो जाएंगे। दुनिया को देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं। You are now burdened with the
deeds, your mind is very impure and soiled by the millions of deeds and the filth of the deeds that it is carrying upon it. So you should sit for meditation. You should sit for your dhyan bhajan for at least 2, 3, 4 hours, and with that you cleanse your mind and go within. Do that practice and go within and manifest the radiant form of the master within. And when you see the wealth that is there inside, you will realize that you have not come into this world to ask from others, but you have come into this world to give to others. क्योंकि हम ध्यान सुमरन में बैठते हैं तो ये मन की आदत है, ये भागता है, फिर लौट के आता है, फिर भागता है, फिर लौट के आता है। ऐसा दौड़ धूप कर कर के ये कितना दौड़ेगा, लेकिन लास्ट में शरीर में ही आना है उसको, कहीं बाहर नहीं जा सकता। जाएगा कितना टाइम जाएगा, वो अपने जगह पे आएगा ही। तो इस तरह से 2 घंटे के बाद में मन दौड़ दौड़ के थक जाता है, 2 अढ़ाई घंटे के बाद, और तब जाके मन स्थिर होता है भजन में, और तब तक हम बैठते ही नहीं हम बैठते 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, और इसलिए कुछ अनुभव नहीं हो पाता। When we sit for meditation, we realize that the mind keeps wavering, it keeps running away outside, and it takes our thoughts and it distracts us and goes elsewhere. But finally, it has to keep returning. So it returns for some few seconds and then again wanders away. That way, when we are sitting for meditation, the mind keeps wandering all over the place, but eventually it has to come back and rest. It gets tired after some time. It has to finally rest in the body only. It cannot go outside. So if you're sitting for meditation for 2 hours or beyond 2 hours, then the mind gets tired and it has to come and sit inside. And then after that, it starts focusing and it starts concentrating and going within. But what happens that when we sit for meditation, we don't sit for that 2 hours. We sit for half an hour, we sit for 1 hour or 1.5 hour. By then, the mind is still wandering and we have not made it still. So we have to have that longer setting hours for making it still. And then only we can enjoy the pleasure of that meditation. Otherwise, we don't get any pleasure in the meditation. कहते हैं जिनको मानव शरीर मिला है सबको अंदर जाने का अधिकार है, सबके अंदर परमात्मा ने समान रूप से वो धन रखा हुआ है, लेकिन उनको पाने के लिए हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। All human beings have been given this ability to go within and realize the truth. But we have to make the effort. We cannot just go within. We have to make that effort to go within. जग को जार दसों न बंदर मदर पर निशानी गुरु मूरत तू धारहिए में मन के संग जो फिरत निमानी। तो वही स्वामी जी महाराज करते हैं, इस तरह ध्यान बैठ के गुरु की मूर्ति को अपने अंदर बिठाओ, माने जैसे हमने गुरु को प्रत्यक्ष देखा है उसी शरीर का ध्यान करना। तो कहते अपने अंदर बिठाओ, और मन का दौड़ना शांत हो जाएगा। जब गुरु आके स्थिर हो जाएगा तो मन जाके स्वरूप में लगेगा और दर्शन में लग जाएगा, तो भटकना छोड़ देता है। So contemplate on the form of the master within, the form of the master as you have seen him. And when you contemplate on the form of the master, that form within becomes steady and we are able to focus on that form or contemplate properly on the form. Once that is done, then the mind gets attracted and has that love and naturally has the love and affection for that form of the master, and it stops wandering here and there. It then remains fixated on the contemplation of the form of the master inside. तो कहते मन के कहने में मत आओ, मन काल का एजेंट है,
इसको उसके मालिक का हुक्म है कि कोई भी भक्ति करके अंदर जाने नहीं पावे, इसीलिए ये भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। So don't listen to your mind, because the mind is an agent of Kal, and the instruction of Kal to the mind is that he should not allow anyone to do the devotion and get out of the realm of Kal. गुरु मूरत तू धारइये में मन के संग जो फिरत निमानी तेरा काज करे गुरु पूरे सुन ले अनद वाणी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है वो पूरा गुरु ही करेंगे। मन के साथ में तुम रह के दुखी होगे और ये तुम्हें भक्ति करने नहीं देगा। So Swamiji Maharaj says that your true work will be done by your master. He will help you complete your work. And if you stay deluded by your mind, then the mind will never allow you to do this work. तो इसीलिए चाहिए कि हमें गुरु के स्वरूप का ध्यान और 5 नाम का सुमरन। हो सकता है कि हमारे महाराज जाके ज्यादा दिन हो गए और स्वरूप आना मुश्किल हो रहा है, तो हम अंधेरे में देखते हुए सुमरन करें, या 5 नाम के ऊपर ध्यान टिका के उसी को देखते हुए सुमरन करें। कैसे भी सुमरन करें, सुमरन पकेगा, मन निर्मल होएगा, तो कामयाबी मिलेगी। So therefore we should do the contemplation of the form of the master at the eye center and do the repetition of the 5 names, and that is how we should do our meditation. Now it may happen that okay, many years have passed from the last time you saw your masters, and maybe that contemplation may be difficult. So in that event, you continue to do Simran at the eye center. Just focus in that darkness and just focus on the Simran. Or if you can't see there, you just focus on and contemplate on the Simran itself. So, but it is important that you do your Simran, because only with the Simran the mind is going to get pure, and then it will allow you to go within. कहते हैं कि सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जो संतों ने हमें दिया है। ये उनका कमाया हुआ नाम होता है जो कि सबके अंदर काम करता है, तो इसीलिए उसके जपने से हमारे पाप कटते जाते हैं, मन पवित्र और निर्मल होते जाता है। So Simran is a very important thing given by the masters, because it is their charging that is working in the Simran, in the repetition, and that charging works for everyone who does the repetition, who does the Simran given by the masters. तेरा काज करे गुरु पूरे सुन ले अनद वाणी कर्म बरम बस सब जग मोरा तू क्यों होत दीवानी। तो वही इशारा देते हैं कि तुम्हारा काम तुम्हारा गुरु ही करेगा। तुम्हारे अंदर जो अनर्थ शब्द हो रहा है वो गुरु के कृपा से ही प्रकट होगा। अगर एक बार वो प्रकट हो गया तो कभी बंद नहीं होता है। आप सो जाओ, शब्द सुनाई देते रहता है, आप जागृत हो, शब्द सुनाई देते रहता है, और मन जाके सबसे जुड़ जाता है। मन दुनिया को लात मार देता है और मन सोने जैसा निर्मल हो जाता है। करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं वो एक शब्द प्रकट होने से। वो बड़ा निर्मल है, पवित्र है, जिसने ये दुनिया बनाई है। So Swamiji Maharaj says that you do your practices and your work will be done by the master, and the master will help you manifest the holy sound current. And once that holy sound current is manifested and your mind gets connected, it becomes very pure and it becomes like gold. And then
whether you are sleeping or whether you're talking or doing anything, you can always listen to that holy sound current. It is resounding within you, and you can continuously hear that holy sound current. The mind, once it gets connected with the sound current, it kicks away all the attractions of the world, and it uh, gets completely lost in the intoxication of that holy sound current. इसके लिए सुमरन पक्का होने तक, गुरु अंदर प्रकट होने के पहले हम जो भी कोई शब्द सुने वो अशाश्वत है, वो आपको कुछ मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। थोड़ा टाइम जरूर अपने सुरत और निरत आत्मा के दो अंग हैं, देखने की सुनने की, उसको जागृत करने के लिए 15-20 मिनट बैठना चाहिए। नहीं तो ज्यादातर सुमरन ध्यान के पीछे पड़ना, पहले गुरु को प्रकट करना। गुरु के कृपा से अनाद नाद ओपन होगा और ज्योति प्रकट होगी और वो शाश्वत रहेगा। अभी हम जो कुछ भी सुनते हैं वो अशाश्वत है, थोड़ा टाइम में बंद हो जाएगा, थोड़ा टाइम में चालू रहेगा। वो ऐसा नहीं, 24 घंटा एक जैसा ही धुनकार देता रहेगा, जो दर्शन के बाद प्रकट होगा। So you should focus on your Simran and the contemplation of the Master, and try to manifest the radiant form of the Master within, and with His grace manifest the holy sound current. Once that holy sound current is manifested, then it is a continuous sound that we can hear throughout the 24 hours. Now, before we do that, before we manifest the um, radiant form of the Master within, we may hear sounds. We may hear the sounds of the lower chakras before that, but these are not permanent sounds, and one should not get too much behind these sounds, because they are not permanent in nature. Sometimes you will listen to them, sometimes they will come, sometimes they will not be there. So these are not permanent sounds, and they don't have the power to pull the soul. Once the So therefore the focus should be more on Simran and more on the contemplation of the Master. और गुरु को प्रकट कर। And once we have manifested that radiant form of the Master inside, then with His grace, He will manifest the Jyoti, and He will manifest the holy sound current. So then we will have the connection with that sound current 24/7. करम बरम बस सब जग गोरा, तू क्यों होत दीवानी। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, दुनियादार को कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्हें सत्संग नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, तो वो अपना कर्म धर्म समझ के दुनिया को पकड़ के रखे हैं और रात दिन उसी में डूबे हुए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं। हम इसीलिए पैदा हुए सोच लेते हैं, लेकिन हमें तो गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला। सत्संग में बार बार हर तरह से सोझी दी जाती है, समझाया जाता है। सब मिलने के बाद बार बार फिर हम उसी दुनिया के रंग में रंगने के लिए जाएं, तो फिर हमारे जैसा फिर अज्ञानी कौन हो सकता है। So Swamiji Maharaj says that for the worldly people, they don't have a master, and they have no knowledge of the truth, and therefore they believe the world to be real, and they follow on the rituals and other forms of worships or whatever the world has to offer, and they believe that they have been born only to do that, only to enjoy this world, or to do whatever practices that the world is offering. So we are not like that, because we have got the benefit or the fortune of meeting the saints, and the saints through their satsangs have time and again explained us, and they again and again explain to us the true purpose of our life, and what we should be doing, and the practices that we should be doing, and the fact that the reality is to go within and go back to God Almighty, and not get distracted by the world outside.
But despite our masters telling us again and again and again, we keep falling back in the pit of the desires for this world and all the attractions that the world has to offer. So Swamiji Maharaj says that if, despite all of this, despite your masters telling you again and again and awakening you again and again, if you go fall back again in these pits, then what can one say to you? I mean, it can only be your uh, complete ignorance. कहते हैं कृपाल सिंह महाराज जी का 2 नंबर का लड़का, जो 14-15 का जवान लड़का था, जब वो गुजर गए तो राजा राम सर्राफ, जो उनके एक दोस्त थे, आगरा में उनके सोने चांदी की बड़ी दुकान है, वो यूपी के थे और महाराज से उनका बड़ा प्रेम था। तो जब उनको पता लगा तो बोले कि यार, तो अभी तो कृपाल बहुत दुखी होंगे क्योंकि जवान लड़का मर गया, चलो थोड़ा तसल्ली बता के आएंगे। तो जब वो वहां से आए दोनों पति पत्नी, तो देखते हैं कृपाल सिंह महाराज के मुंह पे कोई जो है कि दुख का कोई लवलेश नहीं, जैसे पहले थे वैसे सब काम करवा रहे। तो सोचा कि अभी तो नहीं, चलो शायद अर्थी उठाने के समय 2 आंसू गिर जाए, तो भी कोई आंसू नहीं। सोचा अच्छा वहां ले जाके जलाने के समय शायद कोई दुख का 2-4 आंसू आ जाए। ये इनके मुंह की तरफ ही देख रहे थे। अब जब वहां गए, मसान में उठा के ले गए, आग लगाया गया, तो भी उनके मुंह पे कोई दुख का लवलेश नहीं, जैसे वैसे आराम से बात कर रहे हैं इस तरह। तब उनसे रहा नहीं गया, तो लौट के आने के बाद कहते, अरे तुम्हारा दिल दिल है क्या पत्थर का है? जवान लड़का मर गया और तुम्हारे मुख पे दुख का कोई लेस ही नहीं, एक बूंद आंसू भी नहीं गिरे। कैसा है तुम्हारा दिल, कैसा है, पत्थर का है क्या? तब उनके दिल पे उसका बड़ा असर हुआ। तो कृपाल सिंह महाराज हंस के कहते हैं कि नहीं, वो मेरा बेटा नहीं था, वो उसका बेटा था, मालिक का। उन्होंने थोड़े दिन के लिए मेरे को पास भेजा था, जब उसने अपने पास बुला लिया तो मैं क्यों दिखूं भाई, मैं क्यों दिखूं? वो अपना चीज अपने पास बुला लिया तो मैं क्यों दुखी हूं? ये सुन के इनके दिल में लग गया कि ये ऐसा है तो इसका गुरु कैसा होगा। तो बोलते हैं अच्छा आपका गुरु कौन है? तो बोलते हैं सावन सिंह महाराज ब्यास वाले। तब वही दोनों जाके वहां नाम लेते हैं उन्हीं के कारण से। When Kirpal Singh Ji's son passed away, he was about 15 years old. And when he passed away, one acquaintance or a friend of Kirpal Singh Ji by the name of Rajaram Saraf, he used to have a jewelry shop in Agra. He felt that Kirpal Singh Ji's son has passed away, so he may be very sad, and we should go and express our condolences and support him in this hour of sorrow. So, husband wife both went to Delhi and to console Kirpal Singh Ji Maharaj. But when he went there and he saw that really on the face of Kirpal Singh Ji Maharaj there was no sorrow or no remorse, and he was as a normal person would be. So he felt that maybe that shock has not yet been absorbed of the bereavement of his son. So perhaps when they put the body and take the funeral procession out, maybe he will feel sad at that time. So he was very closely observing Kirpal Singh Ji, and even at that time there was no tear or no sorrow on the face of Kirpal Singh Ji Maharaj. Then he felt that maybe at the time of uh, the cremation, maybe he will feel sad or he will have tears. So we'll console him at that time. But then even then, Kirpal Singh Ji
even when he cremated the body, he did not have any sorrow or remorse. So when they went home, Rajaram Saraf spoke to Kirpal Singh Ji and asked him whether he really had a heart of stone, because he felt that your young son has expired, and I don't see any sign of sorrow on your face. I don't. You're behaving as if everything is normal. So what is it? Your how is, I mean, is your stone heart of stone? But then Kirpal Singh Ji told him that look, uh, why should I feel sorrow for this? It is God's will. God allowed him to come into my life, and then he himself took him away. So it is not something that I should feel sorrow about. So looking at this and these kind of thoughts of Kirpal Singh Ji, Rajaram Saraf was uh, he was very impressed, and he asked him as to who his master was and guru was. So Kirpal Singh Ji told him that it is Saman Singh Ji Maharaj of Bias, and that is how Rajaram Saraf and his wife then went there, and they took initiation from Saman Singh Ji Maharaj. तो कहते हैं, इस तरह से अगर गुरु की कृपा से वो शब्द प्रकट हो जाए तो हमारा मोह और ये काम क्रोध लोभ मोह निकल जाते हैं हमेशा के लिए। कोई घर में पैदा हो खुशी नहीं, और कोई साथ छोड़ के चला जाए तो दुख नहीं। ये सुख दुख दोनों बराबर हो जाते हैं। So that is what happens when the mind gets connected to the holy sound current. It is so intoxicated in that sound current that it loses all attachment for everything in this world. All the attachments of family or members or friends, all of that attachment is no longer there in presence of that holy sound current, and therefore that feeling of joy or that feeling of sorrow is no longer there, because the mind is so detached from this world, and it is completely now attached to that holy sound current. करम बरम सब जग गोरा, तू क्यों होत दीवानी, सूरत समार करो सत्संगत, जो विष अमृत सानी। तो वही लास्ट में स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत संभाल करो सत्संगत, क्यों विष अमृत सानी। कहते हैं कि अच्छी तरह से सत्संग में बैठो, जागृत होकर सत्संग सुनो, हाँ, और उसकी सच्चाई को समझो और उसको अपने आचरण में लेके आओ। क्यों विष अमृत सानी, ये जहर और ये नाम अमृत, ये दोनों को क्यों मिला रहे हो? क्योंकि ये दुनिया का सामान सब जहर है, और ये अंदर शब्द और गुरु, ये भक्ति, ये अमृत है। तो दोनों को क्यों मिला रहे हो? उससे आपका नुकसान है। So Swamiji Maharaj says that when you go in the company of the masters, you sit with full attention to what the masters have to say and absorb everything that is being told to you by the masters, and try to assimilate as much as you can of the words spoken by the master, and try to internalize it and bring it into your daily life, such that you will be able to then be motivated to go within, do your devotion, and manifest his form within. Now, he questions why, when you have this milk available to you for your absorption, you are getting lost in the poisons of the world. The all the attractions and everything, all the pulls of the world are all like poison, and it is he therefore asks that why are you mixing the poison with the milk, or this pure nectar that you're getting from the masters? Don't mix these.
keep your detachment to the poisons and stay attracted to the nectar that the master is offering you. हम जब केंगेरी में गए 74 में जनवरी जनवरी के में ही पहुंचे थे वहां और 74 में 6 महीने सेवा किया और एक बार मन धोखा दिया कि बाबा जी बॉम्बे जा रहे थे तो मैं बोला महाराज आपके साथ हम भी आएंगे और माँ बाप वहां रहते हैं उनसे मिल के वापस आ जाएंगे क्योंकि ये लोग लेटर पे लेटर डालते थे और वो पढ़ पढ़ के हमारा भी ध्यान उस तरफ बढ़ने लगा So in 1974, when I went to the Kengeri Ashram, I was there doing seva, and after nearly 6 months, the mind and the attachment started playing a trick. And once when Babaji was coming to Mumbai, I requested him that I also wanted to accompany him because my parents were here in Mumbai and I could also meet them. And this attachment happened because over the last or the previous 6 months, uh, my mother was writing letters and I was getting letter upon letter asking to come back, and so I had all those emotional kind of attachments that were building up within. तो बाद में महाराज कहते हैं कि देखो मैं रहता नहीं हूँ 15 दिन के लिए जा रहा हूँ 3 जगह सत्संग करना है और तुम नाइट ड्यूटी अच्छा करता है और चोरी होने का डर होता है तो तुम इधर पहरा करो देख रेख करो हम आने के बाद आपको भेज देंगे So Babaji told me that look, I'm going there for 15 days. So there is no one to look after the ashram or pay or do the guarding of the periphery of the ashram. So if you are also not there, then it won't be appropriate. And I'm going for nearly 15 days and I'm going to 2 or 3 places. So what we'll do is I'll go and come, and after I come, then I will make arrangements for you to go to Mumbai and come. तो अब मन वही पकड़ लिया बाबा जी चले गए हम नाइट ड्यूटी के समय जो सुमरन करते थे अब ये ख्याल आने लग गए कि बाबा जी आएंगे तो बम्बई जाएंगे उनसे मिलेंगे इनसे मिलेंगे अब सुमरन कम होने लगा तो बाबा जी 15-20 दिन में आए तो बाबा जी के सामने जाने में डर लगता था तो सोचा कि और भी 10 दिन जाने दो 10-12 दिन गए तो बाद में फिर सवेरे सोच के जाना आज महाराज से पूछेंगे क्योंकि महाराज ने बोला था आने के बाद भेज देंगे फिर भी पूछने में डर था तो सवेरे सोच के जाना महाराज के पास जाते ही हिम्मत ना पड़े महाराज को देखते ही तो भूल जाए और प्रसाद लेके नीचे आ जाए फिर शाम को प्रसाद देते थे सेवादारों को फिर ऊपर जाएं महाराज को देखते ही हिम्मत ना पड़े फिर प्रसाद लेके नीचे उतर 1.5 महीना So that way, he told me that I will go and then I'll make your arrangements to go. And then he left for the Bombay program. Now, my mind caught this idea that I'm going to go to Mumbai after he returns. And that started playing on my mind. So when I used to do this night seva, where I used to do Simran continuously, now these thoughts started coming that when I go to Mumbai, I will meet this person, I will meet that person, I will do this, I will do that. All these things started. And the Simran started reducing. So after 15-20 days, Maharaj, Somnath Babaji came back. Now when he came back, of course he had promised me that he'll make arrangements for me to go. But even then, I didn't have the daring to ask him. So 5-10 days passed just like that, without anything. And then I thought that, okay, I will ask him or maybe gently remind him because he had told me that he'll make this arrangement. So though he had told me he's going to send me, I was hesitating to ask. So every day morning when I went for darshan,
I would decide that I will ask him now. When I went there and I stood before him, I did not have the daring to ask him. So again, I would just take prasad and leave. Then again, evenings he would give darshan to sevadars. Again, I would decide that okay, I'm going to ask him now and go there. Then again, just take prasad and come back. So like that, without asking, and every day thinking like this, nearly 1.5 months passed. तो एक दिन हिम्मत करके खड़े हो गए तो महाराज हंसने लगे, कहते क्या बात है? हम बोला आप कहते ना कि आने के बाद भेज देंगे, जाके बॉम्बे आ जाते हैं। तो बाबा जी ने ऐसा देखा, कहते क्या नौकरी करने का ख्याल है क्या? तो हम बोला उस समय देखो मन बिगड़ गया है, सोचा 2-4 महीना नौकरी भी करेंगे, नौकरी करने का है क्या? हम बोला हाँ महाराज थोड़ा दिन करना पड़ेगा। तो बाबा जी ने ऐसा देखा, कहते अरे क्या 200-400 की कोई नौकरी होती है? ऐसा देख के बोला तो मेरा सब जो दिमाग में था वो सब कहाँ गया मालूम नहीं। हमेशा के लिए उनकी एक दया दृष्टि से मेरे अंदर जो मोह था, कुटुंब परिवार है, गांव है, घर वाले हैं, वो सब निकल गया 1 सेकंड में, खाली उनकी एक दया दृष्टि से। 6.5 महीने में ही ऐसा हो गया, फिर हमें सपने में भी किसी का ख्याल आया नहीं। So ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। So after nearly 1.5 months, finally I mustered the courage and I stood before him to ask him. So he looked up at me and he asked me, "What is it?" And he said, "You want to go?" So I said, "Yes, I want to go to visit Mumbai." And in that many days, my mind had caught on to that idea so strongly that it had built upon several things in the mind. So he said, "Oh, are you going to go back and look for a job there in Mumbai?" So I said, "Yeah, maybe for 3-4 months I will work." See, the mind is such that in such a short time it had built up everything around it. So I had also made up my mind that I'll go back, I'll work a little and do all that. So he looked at me and he started, he looked at me and then he said, "What is that job where you're going to earn 300-400 rupees? What is the big idea of doing a job which gives you only 300-400 rupees?" And he said that, and the way he said it, that one sentence completely turned my life, and all the thoughts that were built in my mind about going back, meeting my parents, taking a job, coming back to Mumbai, everything vanished with that one sentence. And after that, I have never ever thought of uh, those thoughts and that attachment. So it is such that the master, with his grace, completely cut off my attachment. So it is, as masters say, that only the master can cut off your attachments like that and bring you completely on the path. सूरत समार करो सतसंगत, 24 अमृत सानी, तेरा दाम अदर में प्यारी, जो दर संग बदानी, जल्दी करो चढ़ो उनसे को, राधा स्वामी के तब कहानी, वही लेना। जल्दी करो चढ़ो उनसे को, राधा स्वामी के तब कहानी। कल का प्रोग्राम बता. हाँ बता। So tomorrow is the last day of this program, and the schedule will be like this: that in the morning
we will have 1 hour meditation instead of 2 hours from 7 to 8. And after 8 o'clock in the foreigners langar, we'll have light snacks. And then there will be the Bhandara Satsang at 9 o'clock, 9 a.m. tomorrow. And following the Bhandara Satsang, there will be langar in the same langar hall of the foreigners. And लंगर जल्दी हो जाएगा. लंगर नहीं 9-10 10:30 तक हो जाएगा ना. And by after the Bhandara Satsang there will be langar, and following the langar then there will be darshan of Babaji. That will be the final darshan of this program. कल सुबह 7 से 8 ध्यान होगा, फिर लाइट स्नैक्स होंगे 8:30 को, और 9 बजे इधर सत्संग होगा, भंडारा सत्संग होगा, और उसके बाद लंगर होगा. इंडियन दर्शन भी होगा कल. इंडिया में 8 बजे मामले रहता है रात को. सो कोई जाने वाला ही नहीं. कोई जो इंडियन संगत में से जो जा रहे हैं कल, वो दर्शन ले सकते हैं लंगर के बाद. नहीं तो रात को 8 बजे जो रेगुलर दर्शन रहता है तभी. रात को फॉरेनर्स का भी दर्शन होगा ना, जो नॉर्मल टाइम. जो लोग रहेंगे. हाँ. So all the foreigners who are also staying, they can also have the darshan again in the evening like usual.